Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Now, today I am giving you NCERT class 10th question answer, English question answer, footprints, chapter 4. Okay, some students have asked me, मैम प्लीज़ आप क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कीजिए, हम लोग को ज़रूरत है, एग्ज़ाम बहुत सामने आ रही है. सो टुडे आई एम डिस्कसिंग द शॉर्ट ट्रिक्स and short question answer, objective type question answer of English. Okay. Chapter 4, a question of trust. A question of trust. And this story is written by Canning, Victor Canning, and the story is about trust. Okay. The first question is, what does Horace Danby like to collect? Horace Danby is a character of the story, and the society has told him that he is a good man, but he is not totally good man. Horace Danby loves to keep rare books and expensive one. Now question 1 is, what does Horace Danby like to collect? उनको क्या क्या collect करना पसंद था? Horace Danby loves to keep rare books and expensive one. Horace Danby को पसंद था एक्सपेंसिव बुक कलेक्ट करना और रेयर बुक्स. ओके, रेयर बुक का मतलब होता है अनकॉमन, जो मतलब बहुत कॉमन नहीं है, अनकॉमन बुक है, उसको कलेक्ट करना. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर? Why does he steal every year? He is a successful businessman who makes locks. वो ताला बनाते थे और बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे. But he loves rare and expensive books, so he robs a safe every year and secretly buys the books through an agent. उनको rare books, uncommon books बहुत पसंद था, इसलिए वो every year है सो बाई करते थे बुक को, अनकॉमन बुक, ताकि उनका शौक था, एक पैसन था कि हम अनकॉमन बुक कलेक्ट करें और उसको रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डैनबी? हॉरेस डैनबी से बात कौन कर रहा था? हॉरेस डैनबी इज स्पीकिंग टू द लेडी इन रेड. हॉरेस डैनबी इज स्पीकिंग टू द लेडी इन रेड. हु अ लेडी इन रेड, he is speaking to that lady. Who is the real culprit of this story? And the question is, who is the real culprit of this story? Real culprit of this story is the lady in red. Sorry, lady in red. Now the next question is, what is the main theme of this chapter? Main theme of this chapter is trust. What was people thought about Horace? Horace was good and honest citizen. Just I have told you. Horace was good and honest citizen. Who is speaking to Horace? Another thief is speaking to Horace. What does Horace Dobby like to collect? Rare books. Why does he steal every year? To buy rare books. To buy rare books. Which one of the following is wrong? Horace is the writer of this story and Horace is not a good person. इसमें कौन सा wrong है? Horace is not a good person or Horace is the writer of this story? So Horace is the writer of this story is wrong because he is not the writer. Writer is Victor Canning. Which of the following is true? Horace is a good honest citizen or Horace age is 50 but he is unmarried. He is good honest citizen also and Horace age is 50 and he is unmarried. Both are correct. Okay. Then next question is, who is the culprit of this story? Culprit of the story is the lady who is in red. What was Danby's ailment and how did herald his presence in the house Sotover Grange? Danby only ailment was hay fever. उनको समर
में कभी कभी शायद फीवर आ जाता था। ही वॉज एलर्जिक टू फ्लावर्स, फ्लावर्स से उनको बहुत एलर्जी था। द पोलन मेड हिम स्नीज एट सूट ओवर ग्रेंज द फ्लावर्स बिट्रेड हिज प्रेजेंस टू द यंग लेडी हु पोर्ड टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। Danby's only ailment was hay fever and he was allergic to flowers. The pollen made him sneeze at Sotover, grange the flowers, betrayed his presence to the young lady who purported to be the mistress of the house. Now the next question is, what precautions did Horace take to avoid arrest? What blunder did he commit in his last venture? What blunder did he commit in his last venture? Horace Danby used to examine his target thoroughly. He carried a bag of selected tools. He put on gloves while at work. He was careful enough not to leave his fingerprints. But in his last venture, he committed the blunder of opening the safe without wearing gloves. लास्ट वो बहुत सावधानी से जब भी अपना काम करते थे, ग्लोव्स पहनते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम को करते थे, लेकिन लास्ट जब काम कर रहे थे तो वो अपना ग्लव्स पहनना भूल गए थे। वाई डिड हॉरेस डैंडी रिमूव हिज ग्लव्स व्हाट वाज इट्स रिजल्ट? जब वो क्यों ग्लव्स को हटाए और उसका रिजल्ट क्या हुआ? द चार्मिंग लेडी इन द रेड हु पोज्ड एज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस थ्रेटन्ड दैट शी वुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। देन शी पिक्ड अप अ सिगरेट. Horace Danby, to please the lady and win her favor, removed his gloves to light the cigarette of the lady. To please her further, he opened the safe of her, forgetting about the gloves. Thus, he left his fingerprints, which resulted in his arrest. वो लेडी को अपने फेवर में करने के लिए ग्लव्स खोल देते हैं, बट वो लेडी फेवर नहीं करती है, जिसके वजह से फिंगरप्रिंट्स छूट जाता है और उसी फिंगरप्रिंट्स के वजह से ही वो पकड़े जाते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन Horace Danby took her to be? If so, at what point did you realize this and how? The story Question of Trust portrays the confidence of the lady in red in real manner. Okay, and the story is about to portray the confidence of the lady in red in real manner, and she has such a confidence that at no moment we can imagine that she is not the लैंड लेडी। हम लोग को पता चले कि वो लैंड लेडी नहीं है। द लेडी टॉक्ड इन अ क्वाइट काइंड बट फर्म वॉइस। वो बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में, बहुत धीमा आवाज़ में बात करती थी। इवन द डॉग वॉज टू फ्रेंडली विथ हर। जो वहाँ डॉग था वो भी उसके साथ बहुत फ्रेंडली हो गया था, उस लेडी के साथ। सी ऑल्सो टॉक ऑफ बिग थिंग्स लाइक प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी फ्रॉम मेन like Horace Danby. Then she further went on with the story of telling that she had come from London for a party and needed jewels for the same. वो बताती थी कि वो लंदन से आई हुई है, उसको ज्वेल्स चाहिए, मतलब ज्वेलरी चाहिए, इसीलिए वो आई हुई है। At no point Horace Danby could suspect of her being the culprit and thus agreed to open the safe for her. At no point Horace could imagine that he was being duped by the lady. It was only 2 days later when he was arrested by the policeman he realized the truth. उसको बाद में पता चलता है कि ये लेडी है सो आई थी सिर्फ उसको फंसाने के लिए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द सबल वेज इन विच द लेडी मैनेज टू डिसीव हॉरेस? डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। into thinking she is the lady of the house. Why doesn't Horace suspect that something is wrong? Horace को कभी पता ही नहीं चल पाता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ओके, द लेडी इन रेड इज़ अ वेरी स्मार्ट लेडी। वो बहुत ही स्मार्ट रहती है। शी हैड कॉट हॉरेस डेनबी अनअवेयर। द लेडी इन रेड told Horace Danby that his sneezing had
brought her down from the top of the house. She said that she had returned a short while ago and had not expected to see a burglar in the house. The lady in red talked smilingly but imposing. She walked so confidently in the drawing room and and strained her ornaments near the fireplace. It is surprising to find that she is threatening to call the police to get Horace Danby caught. Her confidence, behavior, smile are all so natural that even a seasoned thief like Horace Danby is trapped. उसका स्माइल, उसका फॉर्म वॉइस, स्लो वॉइस, उसका स्माइल बहुत नेचुरल था, जिसमें वो हॉरेस डैनबी बहुत इजीली ट्रैप हो जाता है, बहुत इजीली उसमें फंस जाता है. अगेन द स्टोरी इन्वेंटेड बाय हर अबाउट गोइंग टू पार्टी साउंडेड ऑल द मोर अननेचुरल. Horace was a very planned thief who had always studied the minute detail. He had studied the detail of the Shotover Grange and knew that family lived in London, so he did not have the slightest idea of going wrong. उसको लगता है वो लेडी सही ही बता रही है, वो वहीं से आई है लंदन से, वो उसके जाल में फंसते जाता है, ट्रैप में फंसते जाता है उस लेडी के जाल में. Now the next question is, Horace Danby was a good and respectable but not completely honest. वो good था, respectable था, but not completely honest. वो honest नहीं था completely. Why do you think this description is apt for Horace? Why can't he be categorized as a typical thief? उसको एक typical thief के रूप में क्यों categorize किया गया? Horace Danby was unmarried. सबसे पहले तो वो unmarried था. He was about 50 years old. ही वॉज अ गुड नेचर मैन. वो तो उसका नेचर तो बहुत अच्छा था. देयर फॉर एवरी वन लाइक्ड हिम, जिसके वजह से सब कोई उसे पसंद करते थे. ही वॉज फेयरली सक्सेसफुल इन हिज प्रोफेशन ऑफ लॉक मेकिंग. वो ताला बनाता था, उसमें तो बहुत ही सक्सेसफुल था. एज ही लिव्ड पीसफुल, सो ही वॉज कंसिडर्ड अ रिस्पेक्टेबल सिटीजन. बहुत पीसफुली रहता था, इसीलिए उसे एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन माना जाता था. बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. वो पूरा कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था. He had a keen fondness of rare and expensive book. He needed a great deal of money to buy books. उसको बहुत शौक था कि कोई भी अनकॉमन बुक और एक्सपेंसिव बुक को ख़रीदे और अपने पास उसको रखे. उसके लिए बहुत मनी चाहिए होता था, तो वो बहुत इजीली उसको भी हैंडल कर लेता था. He can't be described as a typical thief because he committed just one theft every year. Moreover, he would रॉब ओनली रिच पीपल. जितने भी रिच पीपल थे उसी को वो रॉब करता था, उसी को वो ठगता था, चोरी करता था. ही नेवर हर्ट एनी वन एंड डिड नॉट कैरी एनी वेपन्स. ही वॉज सबमिसिव एंड डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू द प्रिजन. सो वी कैन जस्टिफाई टू से दैट ही वॉज नॉट अ टिपिकल थिफ. सो हम लोग को पता चलता है वो एक टिपिकल थिफ नहीं था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Horace Danby was a meticulous planner, but still he faltered. Why did he go wrong and why? Horace Danby robbed a safe every year, which was enough to last for 12 months. He planned his robbery very meticulously for 2 weeks. He had been studying the complex situation of the house at Shotover Grange. In the magazine, he had read the situation of room, electric wire path and its garden. उसको गार्डन, इलेक्ट्रिक पाथ, ये सब जगह का सिचुएशन कैसे कैसे वो सब पता करके रखा था. ही हैड स्टडीड द डिटेल प्लान ऑफ द ड्राइंग रूम. ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की. ही हैड इवन लर्न द नेम ऑफ द डॉग. उसको डॉग का नेम भी पता था, कहाँ पे की रखा जाता है वो भी पता था उसे अच्छे से. सो ही The only major mistake had been that he had not even once met the owner of the house. वो ओनर जो है हाउस का, उससे वो नहीं मिला था. He did not know that he landlady was quite an old lady of 60. If he had known the lady of the house, then the lady in red could not have tricked him. The other mistake was that he had not cut the telephone wires. अदर मिस्टेक उसका था कि टेलीफोन वायर को कट नहीं करता है. He also opened the safe without gloves and which left his fingerprints all over, and he was easily found and arrested for the jewels robbery. Okay, so that's it. In next video I will give you the detailed description and discussion explanation of next chapter. Okay,
If you like this video, share among your friends and like it. Bye. Bye everyone.